यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर 10। तो 2017 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मार्क्स 10 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन ऑल एंटायर फंक्शंस एफ जेड सच दैट जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ वन अपॉन जेड। क्लियर। तो हमको इसके डिटरमाइन ऑल एंटायर फंक्शंस एफ जेड सच दैट जीरो is removable singularity of f1 upon z। क्लियर। इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। as the as the function as the function fz has no singularity singularity in the finite part of the plane of the plane। clear। it it can be expanded in Taylor series Taylor series in any circle in any circle mod z is equal to k, where k is arbitrarily
arbitrarily fz is equal to sigma r is equal to 0 से infinite ar z की पावर r also if fz has no singularity at z is equal to infinite. Clear? f 1 by z has known at z is equal to 0. Clear? Moreover, moreover, since fz has no singularity in finite part of plane behave be have fz is equal to r is equal to 0 infinite ar zr
1/z is equal to since fz has a pole has a pole of order in at infinity 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 f 1/z has a pole of order n at 0 0 clear f 1/z is equal to sigma 1 is equal to n vs upon zs plus phi z where phi z is a regular function regular function of z hence phi z plus s is equal to 1 bs zs is equal to sigma r is equal to 0 infinite ar माइनस आर क्लियर तो ये हो जाएगा आपका फाई जेड इज इक्वल टू
ए कांस्टेंट, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट n plus 1 is equal to a n plus 2 1 upon z is equal to sigma r is equal to 0 infinite an ये होगा आपका ए एन प्लस 2, ये यहाँ पर एन होगा, सॉरी ये आपका होगा एन, एन इज इक्वल टू 0, तब ये हो जाएगा माइनस आर, तब ये इसको आप लिख सकते हो ए नॉट प्लस ए वन अपॉन जेड प्लस ए टू अपॉन जेड टू प्लस डॉट 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 डॉट, क्लियर। अब ये हो जाएगा वह 1 अपॉन जेड is a removable is a removable singularity singularity of of degrees of degree n, आंसर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।